I hope you all are good and happy. So today we are going to begin with the lesson number 5, that is Wait Panna Die. So here let's see. Students, in this chapter you are going to study about brave people and will take inspiration from them. Here, dear children, we have heard great stories of the brave. बहुत great stories सुनिए brave लोगों के बारे में. Can you identify any and write the names of these brave people from India? You have to identify these brave people. Shivaji, Rani Lakshmi Bai, Bhagat Singh. So you have to write the name of these people over here. Rana Sanga was the king of Mewar. Rana Sanga was the king of Mewar. Everyone in his kingdom loved him. हर कोई उन्हें प्यार करता था उनके kingdom के को भी लोग किसका को नहीं प्यार करते. But he died at a young age. वो बहुत छोटी सी एज में उनकी डेथ हो गई थी. Leaving his infant son Uday Singh behind. अपने एक infant son को छोड़ गए वो अपने पीछे. He was a courageous and mighty ruler. वो एकदम courageous और mighty ruler थे. So his brother Vikram Singh sat on the throne. फिर कौन बैठा throne पे? राजपाट पे कौन बैठा? उनका brother Vikram Singh. But Vikram was not as able a king as Rana Sanga. वो इतना अच्छा नहीं था जैसे Rana Sanga थे. He was cruel. वो बहुत cruel था. People of Mewar disliked him. People जो लोग थे मेवाड़ के वो उसको बिल्कुल पसंद करते थे. Some even became his enemies. कुछ तो उसके दुश्मन बन गए थे. Banveer Singh, chief of Mewar army. Banveer Singh कौन थे? Chief Mewar army के. Was a man driven by ambition. वो एक man थे जो कुछ driven थे, ambitious man थे वो बहुत. His goal was to kill king. उसका गोल था kill करना king विक्रम को and occupy करना throne for himself. He had also planned to kill Uday Singh. उसने प्लान करा उदय सिंह को भी किल करने के लिए चुनगा. तो कौन था? राणा संगा का बेटा था. Uday Singh was just a small child when his mother passed away. उदय सिंह बहुत छोटा child थे, उसकी mother भी pass हो गई. And he was entrusted to the care of Panna Dai. किसकी trust में था? Panna Dai की trust में. A loyal maid thief of royal family, she raised Uday Singh as her own son. उन्होंने उदय सिंह को अपने बेटे की तरह पाला. So alongside her own child Chandan, who was of the same age of Uday Singh, और साइड में उनका एक बेटा था चंदन जो 3 था. One day a servant came running to Panna to give her some information he had overheard. फिर एक दिन एक सर्वेंट भागा भागा आया पन्ना के पास, पन्ना दाई के पास, जो उसके पास इंफॉर्मेशन थी वो देने के लिए पन्ना दाई को. I heard Banveer trying to kill Uday Singh, said the servant. सर्वेंट ने बोला मैंने तो सुना है बलवीर ट्राई कर रहा है किल करने की, उदय सिंह को किल करने का प्लान कर रहा है. He is coming here to kill him. He added, catching his breath. अपनी breath को catch करके बोला वो यहाँ आ रहा है उसको किल करने के लिए. Panna was shocked to hear the information. Panna shock हो गई information को सुन के. Then gathering courage, he thought of a plan to save young Uday. फिर एकदम उन्होंने प्लान सोचा कि young उदय को बचाने के लिए. Can you do me a favor? said Panna to the servant. Panna ने बोला servant से क्या तुम मुझे एक favor कर सकते हो? Yes, Panna. Why not? Tell me what do you want me to do? चलो बताओ मैं क्या चाहती हूँ मैं क्या करूँ? Asked the loyal servant to Panna. Panna carried Uday Singh in a small basket and asked the servant to take him out of the town immediately. Panna ने उदय सिंह को एक छोटी सी बास्केट में हाइका बोला servant से कि टाउन पे ले जाओ immediately. Then she laid her son Chandan on Uday Singh's bed. उन्होंने चंदन को उदय सिंह के बेड पे लिटा दिया अपने बेटे को. Just then Banveer entered with a sword in hand. जब भी बनवीर आया तो हाथ में sword लेके, where is Uday Singh? He demanded of Panna. Panna से बोला उदय सिंह कहाँ है? She pointed silently towards the bed. उन्होंने silently point करा बेड की तरफ. Where Chandan lay sleeping था तो चंदन सो रहा था. Without thinking twice, Banveer moved forward and killed the innocent child before the fire. तो एक बार वो सोचे ना बनी है उसने बच्चे को मार दिया जाने से पहले. Panna could only stand there weeping in silence. So in this heartbreaking moment, Panna Dai sacrificed her own son to save the life of the future king of Mewar. इसीलिए क्या हुआ पन्ना दाई ने her act of unparalleled sacrifice ensured Uday Singh's survival. Act of unparalleled sacrifice ensured that Uday Singh बच गया. Securing his place in history, Panna Dai's name became immortalized in India's history. पन्ना दाई का नेम था immortalized हो गया, मतलब कभी मरा नहीं उनका नाम हमारे इंडियन हिस्ट्री में. So that's all for the story. I hope you have understood the story thoroughly. So see you in the